Good morning, class. Today we are going to study the new topic, ratio and proportion. Okay, ratio and proportion. First, we will see the ratio. What mean by the ratio? Ratio means comparison of the two quantities. Comparison of the two things, any things. For example, ratio of my age and my child age. Ratio of my age and my child age. Second example we can take ratio of my height and my student height. Ratio of my height and my student height. Like that, it is known as the ratio. A ratio is a method. Okay, ratio is a method to compare two quantities. What mean by the ratio? Comparison of two quantities. Then another one, ratio is the perfect number. Ratio is the perfect number, or you can say the pure number. Ratio does not have the unit. Ratio have no unit. This is very important. You have to keep it in mind. Whenever you are giving the competitive exams, they always ask, ratio have dash unit. The answer is no unit. Then ratio always expressed in the lowest term. Expressed in lowest term. Ratio always expressed in lowest term or simplest form. You can say to it simplest form. It means the ratio. Okay. Whenever ratio is multiplied by or divided by the same number. The ratio means, what mean by the ratio? A upon B. This is the ratio. When ratio is multiplied by or divided by the same number, it doesn't affect. But to the numerator and denominator both. See, when it multiplied by 5 upon 5, it is the remain same. The ratio always remains same when it is multiplied or divided. And now multiply this ratio A upon B by 5 upon 5. Or by 10 upon 10, multiply by 10 upon 10, the value is the same, it remains same. Instead of that, if I have divided that ratio, A upon B divided by 2 upon 2, or maybe 12 upon 12, the value of the ratio remains same. You got understood? So these are the important facts about the ratio. Now see, we will see about the proportion. Now we will see the proportion. Proportion means equality of the two ratios. Proportion means equality of two ratios. For example, A upon B is equal to P upon Q. When A upon B is equal to P upon Q, that means these two ratios are equal. That means it is in proportion. What is now? For example, 3 upon 4 equal to 6 upon 8. So it is in proportion. Then what mean by the proportion again? See, another one important thing, ratio between the first and second quantity. Ratio between the first and second quantity is equal to ratio between the third and fourth quantity. It is given like that.
A has to B has to P has to Q. That means ratio between the A has to B is equal to ratio between the P has to Q. मतलब फर्स्ट दो क्वांटिटी और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड का रेशियो अगर थर्ड फोर्थ के रेशियो के साथ इक्वल है, सो वी कैन से दैट इट इज इन द proportion. Then another one thing here, this middle term is known as the mean term. It's known as the mean term, and this end term, ये पहली वाली और ये लास्ट वाली, ये पहली वाली और ये लास्ट वाली, दोनों को क्या बोला जाएगा? These are known as the extreme term. Extreme term. सेकेंड और थर्ड इन दोनों को बोला जाएगा मीन टर्म, और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म को बोला जाएगा एक्सट्रीम टर्म. और एक इंपॉर्टेंट थिंग, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है. दैट मींस A into Q इक्वल टू B into P. मिडल वाली दो टर्म का मल्टीप्लाई कितना होता है? फर्स्ट और लास्ट की टर्म का मल्टीप्लाई सेम होता है अगर वो प्रोपोर्शन में है तो. If it is in proportion, we can say that mean term product of mean term is equal to product of extreme term. Okay, मतलब मिडल वाली दो टर्म का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के जितना होना चाहिए अगर वो प्रोपोर्शन में है तो. अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा. सो दैट इज द वे टू फाइंड द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो फर्स्ट मिडल टर्म का और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई कर लो. अगर दोनों इक्वल आया so we can say that it is in proportion. अगर दोनों इक्वल नहीं आया so we can say that it is not in proportion. Then another one thing, how it is called? For example, A has to B equal to C has to D. So इसको बोला जाएगा, ये फर्स्ट जो टर्म है इसको बोला जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल. कैसे बोला जाएगा? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल. Because these words proportional, these words are used in the word problems, so you have to keep it in mind. That's why I am going to remind you. Then another one thing, continued proportion. Okay, another one thing, continue. What mean by the continued proportion? In continued proportional, there is only three terms. Here four terms are there. A has to B is equal to C has to D. So here four terms are there, but in continued proportional there are only three terms are there. Okay, in continued proportional there are only three terms. See now, what mean by the continued proportional? Continued proportional. You think for some time what mean by the continued proportional? Okay, so think it. Okay, continued proportional means when only three terms A, B and C. How these are in proportional? To proportional we require the two ratio. और तीन के ऊपर के रेशियो, तीन से रेशियो कैसे बनाएंगे? So in this case फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे A has to B, इन दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, और वैसा ही फर्स्ट टाइम इन दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, और सेकेंड टाइम इन दोनों का रेशियो इक्वल है. जैसे B has to C, A और B रेशियो और B और C रेशियो ये अगर इक्वल है तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल. क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूड. सो हैव यू गॉट अंडरस्टूड? यहाँ पे मिडल वाली टर्म जो है वो रिपीट होती है. Which term is repeating? Middle term is repeating in continued proportional. See now, another one thing, okay, that means square of middle term B square is equal to A into C. Okay, मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर वो कितना होना चाहिए?
फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई जितना होना चाहिए। मिडल टर्म का स्क्वायर जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के जितना होना चाहिए। ओके, सो देन वी कैन से इट इज इन द कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। सो आई थिंक यू हैव गॉट अंडरस्टूड ऑल द डाउट्स अबाउट दिस कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। ओके, आई विल टेक one example about for the ratio example I am taking. Okay, suppose my age is 30. My age is 30 years, and my son's age is 5 years. So we have to find the ratio. How to find the ratio? 30 years upon 5 years. Ratio of my age to my son's age, which will now here same, so here get cancelled. So 30 upon 5. 5 1 is 5 6. That means 6 upon 5. That means 6 add to 1. What is the ratio of my age to my son's age, which will be 6 as to 1. But what is the ratio of my son's age to my age? अगर पहले मेरा सन की एज बोला है, मेरा बाद में पूछा है, तो वो आएगा 1:6. Then second one we will see the proportion. Proportion के ऊपर एक एग्जांपल लेंगे. Proportion. We have to find that 3, 6, 4, 8 these are in continuous proportional or not. ये continuous proportional में है या नहीं, इसको फाइंड करना है. So simple है. फर्स्ट दो 3:6 पहले रेशियो लेंगे, या फिर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. दोनों मेथड यूज कर सकते हैं. या तो इन दोनों का सेपरेट रेशियो करके उसको पता करो, अगर दो रेशियो इक्वल है सो इट इज इन प्रोपोर्शनल. या फिर मीन टर्म और एक्सटेंड टर्म का मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी फाइंड कर सकते हो ये प्रोपोर्शन है या नहीं. तो रेशियो, फर्स्ट रेशियो 3:4 means 3:6 means 3/6. 3 1 3 2 1/2. What is the first ratio? 1/2. Second ratio 4:8. 4:8 equal to 4/8. 1 2 that means 1/2. ये भी रेशियो इक्वल है, so we can say that it is in continuous proportional. Sorry, it is in proportional. लास्ट में तुम्हें सेंटेंस में आंसर लिखना है. Ratio 1 is equal to ratio 2, so it is in proportional. Okay. Now continued proportional. Continued proportional. So we take one example. Okay, 9. 3, 9 and 27. 3, 9 and 27. क्या बोला मैंने? या तो इसका स्क्वायर ए बी और सी, मतलब बी स्क्वायर जो है इतना होना चाहिए ए इंटू सी. बी स्क्वायर क्या आएगा? 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 27. 9 स्क्वायर आएगा 81, 3 इंटू 27 आएगा 81. तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन. या फिर दोनों का रेशियो निकाल के देखो. 3:9 3 1 3 3 3 का 1:3. और इसका निकालो 9:27. 9 1 9 1 9 1 9 3 27. So 1:3 1:3. So it is in the continuous proportion. Okay. So this is all about the ratio and proportion.